Good evening, friends. This is Amit Seth for you, and I hope all of you are doing well. Friends, this week we are coming out with a video which discusses how to trade divergences with MACD and moving averages. दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ट्रेड डाइवर्जेंसेस विद MACD and moving averages. Friends, before I begin this video, it is important for you that you watch this video till the end. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लास्ट में ये डिस्कस किया है कि कहां ये स्ट्रैटेजी नहीं वर्क कर रही है. So more than the strategy part of it, it is important to understand where the strategy is working and when the strategy is not working. तो आप आधा वीडियो देख लेंगे, फिर आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी इस सब्जेक्ट पे, and then you will trade in the wrong fashion. So my request to you that if you truly want to understand this topic of trading divergences with MACD and moving average, you must watch this video till the end, because in the end I have discussed instances where this strategy is not working and why it is not working. So friends, we will begin with this session of ours, and we will discuss how to trade divergences with MACD and moving average. Yes. So friends, there is a disclaimer. आप थोड़ा सा 30 seconds इसको पढ़ लीजिए, 5 to 10 seconds, and then we will begin with the strategy. Okay, so we are going to start with our strategy session. Friends, what are the indicators to be used? We will use a MACD histogram with standard settings of 12, 26, 9. We will use a 8 period exponential moving average, and we will use a 13 period exponential moving average. So दोस्तों, हमने सिर्फ 3 इंडिकेटर यूज करने हैं स्ट्रैटेजी में. पहला MACD हिस्टोग्राम. सो मैं जरा सा एक पॉइंटर ऑप्शन आपके लिए ऑन कर लेता हूं, मेरे लिए भी इजी रहेगा. सो वी आर जस्ट गोइंग टू यूज MACD हिस्टोग्राम एंड 8 period exponential moving average, and the third indicator that we are going to use is 13 period exponential moving averages. On MACD histogram, friends, we are merely going to use the histogram. हम MACD के signal line और MACD line नहीं use करेंगे. We are not going to use the MACD signal line or the MACD line. We are simply going to use MACD histogram for detecting divergences. So friends, this is our template. So what are the rules for bullish divergence? Price makes a lower low. Friends, इसको ध्यान से सुनिएगा. Price makes a lower low and MACD histogram makes a higher low. This is our first condition. Our second condition, MACD histogram must move above the zero line between two peaks of MACD histogram for being considered as correct divergence. We have a bullish crossover on 8 by 13 exponential moving averages. ये हमारी थर्ड कंडीशंस है. तो सुनने में आपको लग रहा होगा पता नहीं what is Amit Seth saying. Okay, but it is easy. I will explain it to you with the help of many charts. So we will discuss some charts to understand the rules for bullish divergences. So after बाद में आप इसका ये स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने लिए to understand what are the rules for bullish divergence, and now I am going to explain you this with the help of a few charts. So friends, let us come to our first chart on bullish divergence. Friends, this is a very recent chart of Hindustan Petroleum. So we can see here that price is moving down. At this point, price makes a lower low. Price makes a lower low. और हम जब ये वाला लो कंसिडर करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द MACD हिस्टोग्राम. कैन यू सी द रीडिंग ऑन MACD हिस्टोग्राम एट द बॉटम? सो MACD हिस्टोग्राम हैज मेड अ लो. एट दिस पॉइंट द प्राइस हैज मेड अ लो. एट द सेकेंड पॉइंट माई प्राइस हैज मेड अ लोअर लो. बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज मेरा जो MACD हिस्टोग्राम है इट हैज मेड अ हायर लो. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये एरो मैंने 2 मार्क किए हैं, दैट देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस एंड द MACD हिस्टोग्राम. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, वी आर मेयरली यूजिंग द हिस्टोग्राम. वी आर नॉट यूजिंग द MACD line and signal line on the MACD indicator. We are merely using the MACD histogram. Friends, so we can see at this point
price makes a low, MACD histogram makes a low, price makes a lower low, price एक और नया लो बनाता है, but MACD histogram makes a higher low. MACD histogram में उतना बड़ा लो नहीं बनता है जो प्रीवियस लो जैसा था. So there is a divergence between price and the MACD histogram. But friends, the fine point कि हमें क्या समझना है, what is the most important point? Before we consider this peak, ये पहली peak and this दूसरी peak, we must make sure कि at least once the MACD histogram moves above the zero line. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पीक के बीच में, जैसे मैंने पहले लिखा था, like I had written before, between these two peaks, MACD histogram must move above the zero line once, and I have marked it with the arrow. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, then there is no divergence. So if the MACD histogram does not move above the zero line between these two peaks, ये पहली peak और ये दूसरी peak जो मैंने मार्क की है, then there is no divergence. So friends, we have been able to spot a divergence on the MACD with price. So how can we enter here? पहला, फॉर अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, कुछ ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में जो वेट नहीं कर सकते, दे आर वेरी एग्रेसिव, दे आर ऑलवेज इन हरी दैट वी हैव टू एंटर. सो अच्छी बात है, एग्रेसिव ट्रेडर्स भी होते हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर्स भी होते हैं. तो वी विल डिस्कस व्हाट एन एग्रेसिव ट्रेडर शुड डू एंड व्हाट अ कंजर्वेटिव ट्रेडर शुड डू. तो फ्रेंड्स, एट दिस पर्टिकुलर एरो यू विल सी दैट MACD histogram has made an uptick. So those who are aggressive traders, they can enter at this MACD histogram uptick, and which is basically this particular candle. So they can enter here, and my negation level would be this. जो swing low है, ये मेरा negation level रहेगा. थोड़े जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं, दोज हु वांट अ बिट ऑफ अ कंफर्मेशन, दे कैन वेट फॉर दिस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर. फ्रेंड्स, मैंने 8 पीरियड EMA ऊपर में लिखा हुआ और पहले भी मेंशन किया है, 8 EMA एंड 13 EMA मूविंग एवरेज इज यूज किए हैं. सो वी हैव अ 8 एंड अ 13 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हियर. सो वी कैन एंटर एट दिस पर्टिकुलर कैंडल. This particular candle is giving us a bullish divergence confirmation. This 8 by 3, 8 by 13 moving average crossover, and we can see after that price is rallying up. This is a very recent chart, last week's chart only. So this is the thing. This is the basic structure of the bullish divergence. We will have a look at another chart. Friends, this is the chart of Coal India. Again, you can see that price has made a lower low here. And my histogram, MACD histogram has made a higher low. This particular point here is higher than this particular point here. तो एक लो यहां बना, MACD histogram में we see there is a reading on the downside. Then we have a lower low on price here, but MACD histogram has made a higher low as I have marked on the chart. And what was the condition for MACD bullish divergence? It has to go above the zero line once. अगर ये जीरो लाइन के ऊपर एक बार ये दो पीक के बीच में नहीं जाता है तो देर इज नो डाइवर्जेंस. अगेन, सो व्हाट एन एग्रेसिव ट्रेडर, फॉर हिम द कंफर्मेशन फॉर MACD बुलिश डाइवर्जेंस इज दिस फर्स्ट अपटेक ऑन MACD हिस्टोग्राम, which is basically this particular candle. For a conservative trader, the confirmation comes here, which is basically the moving average 8 by 13 crossover. But we can see that this particular candle is far away from the moving average 8 and 13. So maybe if it is very far away from the 8 period moving average, we can wait for the pullback if it comes and then enter near these moving averages. And after that, we see there is a rally on the upside. So friends, I hope it is clear that what a divergence on MACD histogram is. The most important condition to consider between the first peak, and this is my first peak and this is my second peak, is to ensure that we have MACD above the zero line at least once. This peak should be higher and price should make a lower low, which is quite evident on the chart. So friends, I mean to say, like, if to make it more clear to you, we are going to share another chart. This is a very recent chart of Larsen and Toubro. So again, you can see that price has made a lower low here. My oscillator, ये मेरी first peak है यहाँ पे. This is my first peak and this is my second peak. So price has made a lower low here and my MACD histogram has made a higher low here. And what was my condition? That MACD zero line must go above
MACD histogram must go above the zero line at least once, and it happens here. And for an aggressive trader, where there's a confirmation for bullish divergence when there is an uptick on the MACD histogram, basically this particular candle. And what will be the negation level? This swing low, the initial swing low. However, for conservative traders, he will wait for a moving average crossover which comes at this particular candle. So we get a 8/13 exponential moving average crossover. So you can see that after these conditions are fulfilled, we have a good rally in Larsen. So I hope this point is clear to you, that what is a bullish divergence, how a bullish divergence is confirmed with the help of MACD and moving averages. So let's take another example. Friends, this is the example of Mahindra and Mahindra Finance. This is a very recent example. So we see again that at this particular low, price has made a lower low. So what are my two reference points? This is my first reference point and this is my second reference point. So at my first reference point, we see that MACD has a good lower reading histogram. At my second reference point, price has made a lower low, but however, my MACD histogram has made a higher low. So it has been shown with the help of an arrow that there is a divergence between the MACD histogram and the price. And what was my most important condition? MACD must move above zero between the first and the second peak. If it does not move above the zero line between the first and the second peak, there is no divergence. So I repeat once again, for aggressive traders, this is my confirmation, the first uptick on MACD, which is basically this particular candle. And for conservative traders, I have marked an arrow which is the moving average crossover. So that is 8/13 exponential moving average crossover. For conservative traders, this would be their confirmation for the divergence. And then again we see that price is gradually moving up. So friends, right now we have discussed what is a बुलिश डाइवर्जेंस. फ्रेंड्स, आई रिपीट वंस अगेन, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. उसको देखे बिना दिस वीडियो इज इनकम्प्लीट. सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस व्हाट इज अ बुलिश डाइवर्जेंस, वी विल डिस्कस व्हाट इज अ बेरिश डाइवर्जेंस. अगेन ये यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो लेटर ऑन ऑफ द स्क्रीन. So price makes a higher high, second time price makes a higher high, and MACD histogram makes a lower low. MACD histogram must move, इस बार रिवर्स हो जाएगा, must move below zero line between two peaks of MACD histogram for being considered as correct divergence. फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत जरूरी है दोनों टेम्पलेट्स में, बुलिश एंड बेरिश में. अगर ये पॉइंट नहीं फुलफिल होता है तो देयर इज नो डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस इनकरेक्ट है. We have a bearish crossover on 8/13 exponential moving averages. तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए. अब हम एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 3 पॉइंट्स. So friends, this is a recent chart of Godrej Properties. So we can see that price has this time reverse हो गया सारा. Price has made a higher high and my MACD, these are my two reference points. ये पहला reference point है, ये second reference point है. ये first peak है MACD histogram की and this is my second peak. So what are we seeing? At the second peak, price has made a higher high, but at the second peak, my MACD histogram has made a lower high. So you can see this divergence here. Anybody can see. I have marked it with the arrow also. And now the most important condition for being considered as a correct divergence, MACD histogram must move below the zero line at least once, which happens here, and my condition on MACD histogram is satisfied. So friends, once again, aggressive traders, they would enter at this first. For them, confirmation of bearish divergence कहाँ है? The first downtick on MACD histogram, the first downtick. So we get this first downtick, which is I think basically this particular candle. But for conservative traders, he will wait for a 8/13 crossover, 8/13 crossover, and then we see a downtrend. अब कई बार ये क्वेश्चन आता है, सर कैसे इसको ट्रेल करे, क्या करे? तो मेरा इनिशियल, इफ वी आर एंटरिंग हियर, माय नेगेशन लेवल इज दिस. इफ वी आर एंटरिंग हियर तो थोड़ा सा 3-4 कैंडल्स के ऊपर इज द नेगेशन लेवल. एंड जनरली इफ देयर इज एन अपटेक, देखिए ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है मैकडी हिस्टोग्राम में, और जब हम फर्स्ट अपटेक देखते हैं, दिस फर्स्ट पर्टिकुलर अपटेक, वी कैन एग्जिट एंड कंफर्म इट विथ प्राइस एक्शन ऑल्सो. देखिए यहाँ पे एक डबल बुलिश कैंडल है, तो हम ये कैंडल पे एग्जिट कर सकते हैं. तो एग्जिट की स्ट्रेटेजी क्या है कि जब तक वी आर गेटिंग अ हायर रीडिंग ऑन द मैकडी हिस्टोग्राम, माय 8 इज EMA is below 13,
मैकडी हिस्टोग्राम डाउन साइड में हायर रीडिंग्स दे रहा है इस पर्टिकुलर कैंडल तक, हम ट्रेड में बने रहेंगे। और जहां ये अपटिक ऊपर होता है दैट मींस बेरिश मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, विच इज कंफर्म्ड। थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, आपको प्राइस एक्शन का भी आइडिया होना चाहिए। इंडिकेटर्स आर गुड बट यू मस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ प्राइस एक्शन ऑल्सो। सो वी कैन सी अ 2 बार रिवर्सल हियर, तो वी मे एग्जिट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। So let's take another example friends. This is a very recent chart of GAIL. This is my first reference point. This is my second reference point. This is my first reference point on MACD and this is my second reference point on MACD histogram. So we see that price has made a higher low. MACD histogram has made a lower low. So there is a divergence. There is a divergence. ये मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है. And what was my important condition? MACD must move below the zero line at least once. तो यहाँ पे हो गया. For aggressive traders, what is the confirmation? This particular downtick on MACD histogram is the confirmation on the divergence, which I think is basically this particular candle. But for conservative traders, he may wait for a 8/13 crossover. Again, price goes down. तो फ्रेंड्स अगर देखिए प्योरली अगर हम इस मैकडी हिस्टोग्राम डाउन टिक में एंटर करते हैं कि जब तक ये डाउन टिक तो वो यहां आता है और यहां से मतलब फिर हम यहीं एग्जिट कर जाते हैं. सो ट्रेलिंग के लिए वी कैन हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑल्सो. यू कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज माई 8/13 इज इन अ डाउन ट्रेंड एंड वी कैन यूज अ ट्रेलिंग बेसिस स्टॉप लॉस. वी कैन यूज अ ट्रेलिंग बेसिस स्टॉप लॉस. सो 8 is below 13 and जब तक probably 13 EMA or you can plot at 21 EMA also. Unless that is breached, you can continue with the trade. I leave that to you how to do that because आज का हमारा basic discussion is divergence. Some other day we will make a video on how to trail your trades. Friends, this is again a trade of ICICI Prudential, very recent trade. So this is my first reference point, this is my second reference point, this is my first reference point on MACD and my second reference point. So we can see that price has made a higher high here. MACD has gone below zero at least once between the two peaks and my MACD histogram has made a lower high. So there is a divergence which is quite evident. The divergence is between price and the MACD histogram. So at this first downtick on MACD histogram, for a conservative, for an aggressive trader, there is a divergence confirmation, and for a conservative trader, once again he will wait for this 8/13 moving average crossover which I have marked. So again देखिए friends, at this point my this candle breaches my 13 EMA, so we can exit here. So एक 13 EMA line को भी हम ट्रेलिंग के लिए we can keep it as a reference point. Friends, this is the chart of Infosys. We can again see that first reference point, second reference point, first reference point, second reference point. So MACD histogram has made a lower high and my price has made a higher high. There is MACD histogram has went below zero line at least once, and on this downtick for an aggressive trader there is a confirmation that there is a divergence confirmation, and for a conservative trader he will wait for a 8/13 crossover. So we can see like one could have exited at this particular candle also because it crossed the 13 EMA. So for trailing we'll discuss some other day, but this is the basic idea कि आज हमें ये समझना है कि what are divergences and how they can be confirmed with the help of MACD and moving averages. Now the most important point friends, can this strategy fail? Of course friends. अच्छा ये अभी वीडियो कंप्लीट नहीं है, इसके बाद मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको और दिखाऊंगा, तो ये मत समझिएगा कि ये लास्ट पेज है तो बस चलिए जी बंद करिए, बिकॉज वो ही पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो कैन दिस स्ट्रैटेजी फेल? ऑफ कोर्स दिस स्ट्रैटेजी कैन फेल. देयर इज नो सच थिंग एज होली ग्रेल फ्रेंड्स. ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं है कि जो फेल नहीं हो सकती. मैंने आपको एक मेथड सिखाया है कि डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मैकडी एंड मूविंग एवरेजेस कैसे हो सकता है. यू कैन यूज दिस. इसका बैक टेस्ट करिए, पुराने चार्ट्स देखिए, सेटअप को यूज करिए और देखिए किन चार्ट्स में ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ऑन विच चार्ट्स विच आर वर्किंग, ऑन विच टाइम फ्रेम इट इज वर्किंग बेस्ट, ऑन मैंने वेयर डज इट सूट यू बेस्ट, सो दैट यू विल हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ. आई नो वेयर इट वर्क्स फॉर मी एग्जैक्टली. सो वो आपको वर्क करना पड़ेगा. तो व्हाट इज द सक्सेस रेशियो? नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना वो खाली सक्सेस रेशियो के पीछे भागते हैं. अरे सक्सेस रेशियो नहीं होता, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग इज द बिगेस्ट सक्सेस
in technical analysis, nothing else. More than the strategy, risk management and position sizes. You have to respect your stop loss. So I have shown you a method. Now it's time for you to do a little bit of hard work to find for yourself. So एक बहुत ही important question है. Lot of people will DM me afterwards. Sir, does this strategy work in all time frames? Yes, it will work on all time frames. Be it weekly, monthly, daily, hourly, 15 minute. It will work on all time frames. Now friends, we will see two examples. अब why I am showing you this example is कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि होली ग्रेल बोल के कुछ नहीं होता है. स्टार्टिंग में जब मैं भी स्ट्रैटेजीज देखता था ना, बहुत खुश हो जाता था, स्ट्रैटेजी मिल गई, अब तो मैं बहुत रुपए कमाऊंगा. कमाए भी रुपए, ऐसी बात नहीं है. बट द थिंग इज, आई हैव दिस थिंग ऑलवेज एट द बैक ऑफ द माइंड दैट अ स्ट्रैटेजी कैन फेल. जब तक आप ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगे, टिल द टाइम यू डोंट एक्सेप्ट दिस फैक्ट that strategy can fail, there is no system which will not fail. You will not be successful in trading. क्योंकि क्यों होगा, आप देखोगे एक दो इंस्टेंस में स्ट्रैटेजी फेल की, आपने स्ट्रैटेजी छोड़ दी एंड यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर स्ट्रैटेजी. तो क्या होगा, सारी लाइफ आप स्ट्रैटेजी हंट करते रह जाओगे. यू विल वेस्ट योर लाइफ in trading just finding strategies and you will never be a successful trader. So always any strategy, चाहे वो strategy मैं बोलूँ या कोई webinar में देखिए या कहीं भी देखिए, each and every strategy is prone to failure. So ये friends, this is a recent chart of Tata Steel. देखिए all the conditions were met. Price has made a higher high. There is a divergence confirmation also. MACD has made a lower high. And MACD went below zero line also. But in spite of everything, यहाँ moving average crossover मिला, टाटा स्टील नहीं करेक्ट हुआ. टाटा स्टील इज साइडवेज. तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज मैं आपको एक रियलिटी चेक कराना चाहता हूं कि होली ग्रेल कुछ नहीं होता. देयर इज नो सच थिंग एज होली ग्रेल. ईच स्ट्रेटेजी कैन फेल. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर दिस नेगेशन लेवल हैज नॉट हिट, बट लेकिन देखिए नथिंग हैज वर्कड ऑल्सो. साइडवेज ही चल रहा है. So like any other indicator, any other study, this study can fail also. So it is very important to tell you that. Another example, Kotak Mahindra Bank. देखिए friends, हर चीज यहाँ पे confirm हुई. MACD went above zero, there is a divergence, price made a lower low, MACD made a higher low, and then there was a uptake, moving average crossover, sideways रहा, stock sideways और fail हो गया. तो it did not go up. It did not go up. सो फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत जरूरी है एक रियलिटी चेक कराना, क्योंकि जब तक मैं आपको रियलिटी चेक नहीं कराऊंगा, आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे. कोई भी स्ट्रैटेजी अगर एक आध बार भी फेल हो जाएगी तो आप बोलोगे अरे जी छोड़ो, ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, लेट्स लुक फॉर अनदर स्ट्रैटेजी. आप जितनी मर्जी स्ट्रैटेजीज देखते रहिए, हर स्ट्रैटेजी फेल होती है कहीं ना कहीं. सो फ्रेंड्स, I would like to end this session. I hope you have liked this session. And I request you to share this video, subscribe my channel. जैसे जैसे subscribership बढ़ेगी, I will come out with more videos. If I find you guys are interested, I will come out with more strategy videos. Thank you.